आप भी नहीं दिए हमारा, यहाँ डायरेक्ट दे हैव अप्रोच्ड बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट विद अगेंस्ट द शो कॉज नोटिस व्हिच इज ओनली अ वेरिफिकेशन प्रोसेस। अतः आपको सूचित किया जाता है कि प्रश्नाधीन स्थल पर काबिज भूमि का भू स्वामित्व दस्तावेज पत्र प्राप्ति दिनांक से 3 दिन के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें। आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समावधि में प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब Annexure P3 में लोकल what is your right over that property? नहीं कोई What is your right over that property? मैलोडी उसमें मैलोड Annexure P2 देखेंगे मैलोड, वहां पर जितने भी प्रॉपर्टी टैक्स हैं वो हम दे रहे हैं मैलोड। और मैलोड 40-50 साल से वहां पर काबिज होके मैलोड हम वहां पर दुकान अपनी चला रहे हैं, सभी कर रहे हैं मैलोड। दुकान जो है मैलोड रोड के इस किनारे भी है और उधर भी है, सभी मैलोड 40-50 साल से मैलोड उस पर काबिज है। और अपना जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो वगैरह जितना भी नगर पालिका को जो जाता है। किस प्रकार की दुकान है, कोई पक्की दुकान है क्या? यस मैलोड। पक्की दुकान कैसे बनाई आपने? पक्की दुकान नहीं मैलोड, अब वहां पर तो टैक्स पटा रहे हैं, मैंने उसका रिसीविंग भी लगाया है। टैक्स पटाने से कोई अधिकार मिल जाएगा? अधिकार तो नहीं मिलता मैलोड, फिर बट मैलोड ये छोटे लोग हैं मैलोड, वहां पर अपना रोजी कर रहे हैं उससे। किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं? मैलोड दुकानें हैं मैलोड की, जो जनरल स्टोर है, किसी का किराना दुकान। जनरल स्टोर तो छोटा व्यवसाय नहीं होता है। मतलब ज्यादा ऐसे बड़े वैसे में नहीं है मैलोड। अब गुमटी, अब ये विधायक साहब जो वहां के लोकल लीडर है वो बोल रहे हैं कि गुमटी बना के भी देंगे, पर वो आश्वासन बस है मैलोड। मैलोड जब तक व्यवस्थापित थोड़ा सा भी हमारे लिए नहीं करेंगे मैलोड, एक साथ पूरा हटा देंगे मैलोड। मैलोड जिसके ऊपर ही इनका पूरा जीवन चल रहा है मैलोड, गरीब लोग हैं मैलोड। 3 दिन के अंदर में कार्रवाई कर देंगे, ऐसा नोटिस वो जारी कर दिए हैं मैलोड। अभी तक तो जवाब नहीं दिया, अभी तो आज 29 तारीख हो गया। Notice simply says submit the documents, and notice is of 18th, and instead of coming and submitting the documents, they've rushed to this court. And the entire petition, there is no mention as to how they came into the ownership of that land, what is their right, what documents they have, or whether any patta was given to them. It is absolutely silent on that. So they should go and submit their documents and plead their case before the competent authority. It is the authority to take decision on them. They're trying to bypass that and they're rushing to this court. And simple, what is the nature? The wordings are to come and submit the document. और ये पहले भी मांगे थे मैलोड, तो उसके हिसाब से मैंने रिप्लाई किए थे। हमको बुलाया गया मैलोड, सभी को बुलाया गया था, तो उसके हिसाब से मैलोड हमने इनको दिया था, वो हमने लगाया है। अब उसके बाद फिर नोटिस जारी कर दिए मैलोड, नोटिस जारी किए हैं 18/9 को मैलोड। पहले वाली बात की प्लीडिंग नहीं है इनकी, ये बोल रहे हैं पहले भी जारी किया था। I'll direct them to file reply Yes. within a period of 15 working days, and thereafter you will take decision within a period of 30 days, and for a period of 60 days they shall not be disturbed. समय बस थोड़ा सा 30 days नहीं है आपके लिए, 15 दिन के भीतर ये अपना जवाब दे देंगे। Why I'm saying so? If you take a decision against them, so at least they may have some time to challenge that somewhere. So 15 days time I'm granting to them to challenge it. If they are not satisfied with you may sit with them and take out any via media so that they may also survive, and you may also have a pure beautification or whatever you want to do it. Because their livelihood is there, na? Yes, madam. हाँ, वो 1 वीक इनको जवाब के लिए देते मतलब आफ्टर 1 वीक हम कर देते हैं, उसके 1 वीक और, तो 21 दिन के अंदर 1 वीक में नहीं हो पाएगा। ये जवाब ये भी लोग पढ़े लिखे नहीं है, कई लोग हो सकते नहीं भी हो, जानकारी ये तो पिटीशन में आके 60 days may be too long. What I respectfully submit. See what is the nature of the petition? It is simply that what I respectfully submit. They may be granted some time to approve because they are already aware about this notice since they have filed it. It's not the case where they are not aware from about 10 days chalo from yes. today. So up to 10 दिन का समय दे दें और 15 दिन का समय इनको दे दें, and I think the cut-off maximum period assigned, my lord, may consider 30 days because 45 days. 30 days would be too early because बीच में छुट्टियां हैं ना. If you take decision on that, छुट्टियां decision तो इनके क्या है? No. But if they want to approach to this court, if the court is not opened on that day,
So therefore, see, what I trying to understand is that if any decision adverse to them is taken, they may say that they are in position for 40, 60 years, 40 years. They say that we are earning their livelihood. So state is a welfare state. They also have to look the plight of the persons. They may be encroachers or whatever it is. For 40, 30 years, you have not taken any decision to remove them, or you have not given, you are taking property tax from them, isn't it? So it's not a case that they don't have any case which can be thrown. Exactly. My lord is absolutely dealing on the compassionate grounds. We very well stand by that. Because removal of any encroachment may not be legally sustainable. They may not be legal, but if they agrees to it, some settlement like. They are apprehending demolition. So that is what. No such action contemplated. Okay. So 30 days का अगर total exercise का समय देते हैं, 45 days would be. ठीक है, ठीक है. 45 days is reasonable. Shri Das for the state, Shri Agrawal for municipal corporation first up. Following relief has been claimed first up. Learned counsel for the petitioner submits that petitioners. How many petitioners are there? So yeah, totally they are all in number is 29. 29 petitions. Among residing and running permanent residents of Bhilai and running small businesses in the small shops which is situated at near Bhagwa Mandir, Vaishali Nagar, Bhilai zone number 2, Durg district, Durg, Chhattisgarh, and they are in possession of the said shops / land from prior to 50-60 years wisdom. He submits that the livelihood of the petitioner depends upon the earning from the shops, from the business carried out from the shops wisdom. That a notice dated 18/9/2024 was issued to the petitioner demanding them to produce the documents with regard to the ownership of the said shops within a period of 3 days, else appropriate proceedings would be drawn by the municipal corporation first up. Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner is in possession of those land for more than 50-60 years, and from time to time, they are also paying the property tax. The notices were issued at the strength of a political person, and by any means, the possession of the petitioner may be disturbed, and they may be ousted from their respective possession.